Okay, hello student, this is Ikhlas Mohiuddin. Today we will be going to solve another paper, and this is May-June 2020, variant 21, right? Okay. Okay, so section A, answer all questions in this section, answer in the spaces provided. Figure 1.1 shows the thinking distance and the braking distance for a car being driven along a dry road and along a wet road at the same speed. So this is representing a dry road and this is representing a wet road. From here to here, 18 meter is representing thinking distance. 43 meter represents braking distance. On a wet road, the thinking distance is 18 meters and the braking distance is 60 meters. In part A, they are asking calculate the total stopping distance for the car on the wet road. Thinking distance को जब हम ऐड करते हैं braking distance के साथ, so it will be equal to total stopping distance, right? So when we add 18 plus 30, 18 plus 60, so it will become 78 meters. So in part B, complete the sentence. The thinking distance is the distance traveled between seeing a hazard and अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थिंकिंग डिस्टेंस है क्या. आप सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार और आपको एकदम से एक हैजर्ड नजर आता है, एक एक जो है वो रुकावट नजर आती है, कोई चीज एकदम से सामने आ जाती है, तो अब आपको उसको बचाना है, आपने ब्रेक लगाने हैं. आपके आपका जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, और ब्रेक लगाने से पहले पहले तक जो आपकी कार या आपकी जो भी व्हीकल है जिसमें आप ट्रेवल कर रहे हैं, जो आप चला रहे हैं, वो जो डिस्टेंस कवर करेगी, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड थिंकिंग डिस्टेंस. सो वी have to complete this sentence. The thinking distance is the distance traveled between seeing a hazard and starting to apply the brakes. Starting to apply the brakes. ब्रेक लगाने से पहले पहले तक का जो डिस्टेंस होता है वो थिंकिंग डिस्टेंस कहलाता है. सजेस्ट वाई द थिंकिंग डिस्टेंस इज सेम ऑन बोथ रोड्स. ठीक है, एक ड्राई रोड है, एक वेट रोड है, दोनों में आप देखें थिंकिंग डिस्टेंस बराबर है, 18 मीटर्स है. सो दोनों रोड पर आपका 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 जो सोचने का वक्त है, टाइम टू थिंक, और उसके बाद आपका आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रोड्स पर बिल्कुल बराबर ही होगा. जाहिर है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा चाहे वो रोड ड्राई है या वेट है. ठीक है, आपका जो थिंकिंग डिस्टेंस है विल बी सेम, और कार की स्पीड भी सेम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्पीड इज सेम, राइट? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? द टाइम टू थिंक और react is same on both roads, right? And cars speed is also the same, right?
समझ आ गई यहाँ तक? Okay. In part two, explain why the braking distance is larger when the road is wet. And we all know that in this particular question, friction is also plays an important role. What is friction? Friction is the opposing force that opposes the motion of an object. ठीक है. अब अगर dry road है तो वहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा. ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? जब आप ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाने के बाद जो जितना भी डिस्टेंस कवर होता है बाय द व्हीकल, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस कहलाता है. और थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेक लगाने से पहले पहले तक का जो डिस्टेंस होता है, जो कार आपकी जो है वो कवर कर रही है, वो थिंकिंग डिस्टेंस है. और ब्रेक लगाने के बाद जितना कवर हो रहा है डिस्टेंस, वो ब्रेकिंग डिस्टेंस है. तो जाहिर है ड्राई रोड पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू द वेट वेट रोड. बिकॉज वेट रोड पर जो है वो आपकी फ्रिक्शन जो है वो कम होगी. ठीक है. तो आप इसको बहुत इजीली लिख सकते हैं कि ब्रेकिंग डिस्टेंस is larger because on wet roads friction is less, due to which vehicle will take more time to stop. Right? उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ आ गया. अगर कोई सवाल है तो पूछ ले रिगार्डिंग दिस वन. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 2. A student performs an experiment to mark the center of mass C on a thin piece of card. There are two holes in the card. Figure 2.1 shows the card and the two lines that a student draws on the card. Describe a method used to draw these two lines in their correct position on the card. Make clear what extra apparatus is needed to. You may draw a diagram if you wish. ये हम जानते हैं कि when we are considering an object that has a uniform size, उसका अगर शेप यूनिफॉर्म है तो उसका सेंटर ऑफ मास always lies at the center because it has a uniform shape. For example, अगर ये एक रेक्टेंगल है, इसका सेंटर ऑफ मास उधर लाई करेगा जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, मींस एट द सेंटर, बिकॉज ये रेक्टेंगल यूनिफॉर्म शेप का है. लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लाइक इन दिस क्वेश्चन हमारे पास एक thin piece of card है जो कि irregular shape का है, and we want to find out its center of mass. So in order to find the center of mass of any irregular shape object, we first hang that cardboard. In this case हमें cardboard को first hang करना पड़ेगा. और hang किससे करेंगे? With a pin or a nail to a hole which can be seen in the diagram, right? Using a plumb line, right? क्योंकि ये जो आपसे कह रहा है कि एक्स्ट्रा एपरेटस कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, आपने वो भी क्लियर बताना है. ठीक है. तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि जब आपने उस होल के जरिए एक प्लम लाइन को हैंग किया, तो वो प्लम लाइन क्या करेगी? फौरन से तो नहीं रुकेगी, थोड़ा सा आपने यू मस्ट हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड, फॉर फ्यू सेकेंड्स अंटिल इट बिकम्स स्टेशनरी, राइट? जब वो स्टेशनरी हो जाएगी, एक जगह रुक जाएगी, देन यू मार्क अ लाइन, फिर से आप एक पूरी लाइन ड्रॉ कर देंगे.
अब ये तो आपने एक होल के साथ ये पूरा प्रोसीजर किया है। इस कार्ड बोर्ड पर दो होल्स हैं, आपने यही प्रोसीजर रिपीट करना है विद अनदर होल, राइट। फिर वही पम्प लाइन हैंग करनी है, उसके रुकने का इंतजार करना है। जब वो रुक जाएगी, देन आपने वो लाइन मार्क करनी है। द लाइंस वेयर दे इंटरसेक्ट, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास वहां पर होगा। तो इस चीज को टेक फ्यू मिनट्स, आप पहले खुद भी लिखें इसको जो मैंने आपको समझाया। फिर आप चेक कीजिए कि आपने किस क्या क्या कंटेंट लिखा है, जो जो मैंने आपको समझा एग्जैक्ट वही लिखा है या उससे अपनी कुछ हट के लिखा है। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, 1-2 मिनट लें और उसको खुद लिखें। यस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपने भी कुछ ऐसी तरह से लिखा होगा। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, hang a cardboard with a pin or a nail to a hole using plumb line. Wait for a few seconds until it becomes stationary. Then mark a line. Repeat this process with another hole. The intersection of all the lines will be its center of mass. Right? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं the student holds the card loosely between her fingers. The card is vertical, resting with its lower edge on a bench as shown in figure 2.2. The card is tilted slightly as shown in figure 2.3, then released. When angle theta is small, the card falls clockwise back to the position shown in figure 2.2. Explain why the card falls anti-clockwise when theta is large. Yes. So we all know that a turning effect can be produced in two directions, clockwise and anti-clockwise. The directions are shown here, right? When we increase the value of theta,
So it will fall anti-clockwise. It will fall anti-clockwise like this. Why? Because of its weight, that producing a turning effect, right? Which will cause the cardboard to fall in original position again, right? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हम थीटा बढ़ाते जाएंगे, इसका ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉल करेगा. बात समझ आ रही है? यस बॉयज एंड गर्ल्स, क्लियर हो गई बात? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज पे क्यों करेगा फॉल? क्योंकि इसका जो वेट है, दैट वेट प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट, और जिसकी वजह से वो दोबारा अपनी किस पोजीशन पे आ जाएगा? ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा, राइट? तो इसको लिख लें कि व्हेन एंगल थीटा becomes large, it falls anti-clockwise due to its weight that produces turning effect, which will cause cardboard to fall in original position again. State one change to the card that makes it more stable. अगर आप इसके इसके एरिया को बढ़ा देंगे, ठीक है, अ, उसकी जो बेस है उसको ब्रॉड कर देंगे, वाइड बेस कर देंगे इसकी, तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सी है वो लोअर हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी. टू मेक इट मोर स्टेबल, टू मेक इट मोर stable, longer its base, which lowers the C, right? स्टेबिलिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें हमें जितनी उसकी वाइडर बेस होगी, उतनी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी. जितना लोअर सेंटर ऑफ मास होगा, उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. क्लियर हो गई बात? ओके जी. A student suspends a spring from a support. He attached different loads to the lower end of the spring. For each load attached, he measured the extension of the spring. Figure 3.1 shows the extension load graph obtained. The extension of the spring is directly proportional to the load. यानी आप जितना लोड बढ़ाते जाएंगे, स्प्रिंग में एक्सटेंशन उतनी बढ़ती जाएगी. State the two features of the graph that shows this. So इसके features क्या हैं? It's a linear line, ठीक है, straight line है. So its linearity means a straight line. और दूसरा क्या है? It passes through origin, right? Next, describe how the student can show that the spring reaches its limit of proportionality at 8 Newton.
This x-axis representing load, and this y-axis representing extension. As load increases, extension in the spring increases. When a load of 8 Newton is applied to a spring, it extends to a length which is equal to 6 centimeter according to this graph, right? So the maximum load that the spring can tolerate is 8 Newton as shown in this graph, right? So if you see कि यहाँ तक तो it shows a linear relationship, ठीक है ना, between extension and load, means load is directly proportional to extension. Beyond that, it reaches to a limit of proportionality, right? And if we increase the spring length till its, we can say, limit of proportionality, so this graph will no longer be a straight line, right? No longer be a straight line. So in the part B, we should write like this: the maximum load that is a spring can tolerate is 8 Newton as shown. Above that, the spring's length increase till its limit of proportionality. The graph will no longer a straight line, right? ओके जी, जब तक लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते रहेंगे, जब तक ये स्ट्रेट लाइन शो करेगा, और अगर आप इसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रीच करते हैं तो फिर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी. ओके, सो द स्प्रिंग इज यूज्ड इन अ simple device known as an accelerometer shown in figure 3.2. The spring is fixed at one end and attached to a mass of 5 kg at the other end. The mass rests on a smooth horizontal surface. There is no friction between the mass and the surface. The whole device is placed in a car. The car accelerates and the student notices that the extension of the spring is 3 centimeter. Using figure 3.1, calculate the acceleration of the car. So we know the formula F equals ma. F is equal to 4 Newton and mass is given, which is equal to 5. We have to find A, right? So what will be the value of A? So A equals to 4 over 5. So it will be equal to 0.8 meter per second square, right? So you can see here, okay, 4. So on a load of 5, the extension is 4. On a load of uh, 5, uh, the extension is equals to 4, right? So it will be equal to 0.8 meter per second square.
Right, glass and iron are both conductors of heat. However, glass is a poor conductor of heat and iron is a good conductor of heat. Describe using ideas about particles how the conduction of heat take place in glass and in iron. You should make it clear why iron is is a better conductor of heat. So first of all, we write hold the process of conduction in glass. So when we give heat to a glass, the molecules of the hot end absorbs thermal energy by the time, and their amplitude of vibration increases, and they collide with the neighboring molecules, right? जैसे उनको हीट मिलेगी वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे और अपने नेबरिंग जो उनके उनके बराबर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको वो अपनी हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे, उनके साथ कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे, उनकी कोलिजन्स बढ़ जाएगी और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, हम हमें ये जो है वी कैन ऑब्जर्व कि एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है from molecule to molecule where towards the cold end, right? So we can write it as molecules at hot end absorb thermal energy, right? Their amplitude of vibration, because they are getting heat, that's why they are vibrating, increases. They collide with neighboring molecules and their amplitude of vibration increases. In this way, in this way, energy is transferred to the cold end, right? Now, conduction in iron. So iron is a good conductor of heat. So in case of iron, conduction take place. Again, vibration of molecules, plus the iron has free electrons as well, so they absorb energy and flow to the cool end of the iron. The electrons will collide with the iron molecules at the cold end, and because of this the kinetic energy increase, and this whole process is called free electron diffusion, राइट? आयरन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हीट मिलेगी और वो जब हीट मिलती है तो वो फ्लो करते हैं उस हीट को लेकर टू द कोल्डर एंड ऑफ द आयरन, और उनकी कोलिजन्स आयरन मॉलिक्यूल्स के साथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से cooler end be आहिस्ता आहिस्ता it becomes hot, and this whole process is called free electron diffusion. So you can write it like this: conduction take place by the vibration of by the vibration of molecules, plus iron has free electrons which absorb energy and flow to the cold end of iron. Electrons collide with iron molecules and their
kinetic energy increases. This process is called free electron diffusion, right? Okay. In part B, figure 4.1 shows apparatus used to show expansion. The glass flask full of water is heated. A student is surprised when the liquid level X in the glass tube falls for a few seconds before it rises. Suggest why the liquid level falls and why it then rises. So जब आपके इस ग्लास फ्लास्क को हीट मिलेगी तो ग्लास पहले आएगा, पानी से पहले हीट की इंटरेक्शन ग्लास के साथ होगी तो ग्लास एक्सपेंड करेगा। तो जो पानी इस ग्लास फ्लास्क के अंदर मौजूद है वो इनिशियली क्या होगा, फॉल करेगा क्योंकि ग्लास एक्सपेंड हो रहा है। उसके बाद थ्रू दैट ग्लास जब हीट पानी को रीच करेगी तो पानी ज्यादा एक्सपेंड करेगा एज कंपेयर टू ग्लास। सो जो वाटर लेवल होगा वो फिर देन राइज करेगा। इनिशियली फॉल करेगा, ड्रॉप होगा क्योंकि ग्लास एक्सपेंड करेगा। उस एक्सपेंशन की वजह से जो पानी ग्लास फ्लास्क के अंदर मौजूद है वो जो है वो ड्रॉप होगा। और फिर ये जब कंडक्शन थ्रू ग्लास पानी के को हीट मिलेगी फिर लिक्विड ग्लास से ज्यादा एक्सपेंड करेगा और दोबारा पानी का लेवल राइज होना शुरू हो जाएगा। सो ग्लास get heated before water, glass expand. So level of water in glass flask initially drops when heat reaches to water. It expands more than glass. So the level of water rises, right? Describe how heat is transferred throughout water in the glass flask. तो जब पानी को हीट मिलेगी और हीट कहाँ से मिल रही है, एट द बॉटम, वो पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे हीट और वो मजीद दूर जाना शुरू हो जाएंगे। हमें पता है कि भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो आफ्टर गेटिंग हीट दे विल move away from each other and become less dense and rises. And because of this, convection current is set up in water, and through that, heat is distributed throughout the liquid or throughout the water, right? So you can write it as water at the bottom, absorb heat, right? Its molecules will move away from each other, away from each other, becomes less dense and rises, due to which convection current is set up and heat is distributed throughout water. So this is how heat is transferred in water which is present in the glass flask, right? Now, question number 5.
use the relationship between pressure, force, and area to explain why it is harder to cut something with a blunt knife than with a sharp knife. So, when we are talking about pressure, we know pressure is equal to force over area. Smaller the area, greater will be the pressure, larger the area, lesser will be the pressure. यही इसका आंसर है और हम यही लिखेंगे कि जो sharp knife है, sharp knife has smaller area. That is why, that's why it exerts greater pressure, greater pressure, whereas blunt knife has larger area exerting lesser pressure, right? Experimental measurement on gas pressure were made by Robert Boyle. He showed that P1 V1 is equal to P2 V2, where P1 and P2 are the initial and the final pressure of a gas, and V1 and V2 are the initial and final volume of the gas. State two quantities that must remain when this equation is used. ये कल भी last time भी शायद आया था. ये जब भी applicable होगा when the temperature of the surrounding is constant. ठीक है? और number of molecules constant हो. Number of molecules of gas. ठीक है? दो चीजें कांस्टेंट होंगी तो फिर हम ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 यूज कर सकते हैं. Figure 5.1 shows the molecule of gas and the volume of gas is halved. The equation suggests that when the volume of gas halves, the pressure doubles. Using ideas about molecules, explain why this happens. It's a very simple one. When the volume becomes half, so pressure will be double. And why the pressure will be double? The molecules of the gas will hit the wall of the container more frequently, right? So molecules of gas will hit the walls of container more frequently, right? A dentist uses a plane mirror to see the back of a tooth. A plane mirror produces an image of an object. Describe the position of this image. So always remember, beta, when we are talking about plane mirrors, so the image will always form behind the mirror with the same distance from the object's distance. यानी जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर से दूर जितना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी उतना ही दूर मिरर से बनेगा. और इमेज कहाँ बनेगा? प्लेन मिरर के केस में बिहाइंड द मिरर. और इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा. ठीक है? प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन जो होती है उसमें नेचर ऑफ द इमेज जो है वो वर्चुअल होती है, राइट? सो यहाँ पे आपको पोजीशन बतानी है तो हम पोजीशन के लिए लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror, behind the mirror with the same distance, with the same distance from object's distance, right? Figure 6.1 shows a plane mirror used by the dentist to see the point labeled X on the tooth. On figure 6.1, mark the position of image X
formed by the mirror. So this is the mirror. This is the dentist eye. So we can extend this mirror. ये इमेजिनरी है, हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो एक्स है, ठीक है, ये मिरर से कितना दूर है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसको मेजर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 सेंटीमीटर की है, तो आपको इमेज भी कहाँ बनाना होगा, 2 सेंटीमीटर पे ही बनेगा। यानी ये इमेज की पोजीशन होगी, यहाँ एक्स इमेज बनेगा। ठीक है, ये मैंने करेक्टरिस्टिक में ही बताया आपको, राइट। ये मिरर है, एक रे यहाँ से जो है वो निकलती है, मिरर को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो जो है जिस पॉइंट पे स्ट्रेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ये इस रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। इसको आप एक्सटेंड करेंगे और एक्स से मिला देंगे। रिफ्लेक्टेड ये डॉटेड होगा, ये वर्चुअल इमेज के लिए हम डॉटेड लाइन शो करते हैं। रियल रेज जो है वो कंटिन्यूअस रेज होती हैं। और अगर हमें वर्चुअल इमेज बनाना है तो हम उसके लिए डॉटेड लाइन बनाएंगे। सो मार्क द पोजीशन ऑफ द इमेज एक्स, हमने मार्क कर दिया, 1 मार्क हमें मिल गया। ड्रॉ अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एक्स टू शो हाउ द डेंटिस्ट सी द ऑब्जेक्ट, ये हमने रे भी बना दी, ये हमें 2 मार्क मिल गए। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज formed by the plane mirror other than its position। ठीक है, अदर देन इट्स पोजीशन, आपने जो है वो ये बात बतानी है। एक करेक्टरिस्टिक कोई आपने जो है वो इमेज का लिखना है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो मिरर में जो इमेज बनता है, इमेज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। और ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड पे बनता है, अपोजिट साइड ऑफ मिरर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट साइड पे इमेज बना हुआ है, राइट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ये रे डायग्राम समझ आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। Two isotopes of carbon are carbon 12 and carbon 14. One of these isotopes, carbon 14, undergoes radioactive decay. So, what is radioactive decay? It's an spontaneous emission of radiation. और रेडिएशन में आपको पता है अल्फा बीटा और गामा गामा रेज होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज। ठीक है, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस में से निकलती हैं। ठीक है, सो यही चीज आपको यहाँ लिखनी है। द spontaneous emission of radiations such as alpha, beta, and gamma rays from unstable nucleus, right। और ये रिएक्शन रैंडम भी होता है, यानी ये एमिशन जो है वो रैंडम भी होती है, राइट। कार्बन 12 हैज अ प्रोटॉन नंबर। आइसोटोप्स के बारे में आरिश आप क्या जानते हैं? व्हाट इज आइसोटोप्स? जी, आइसोटोप्स में क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कार्बन 12 के 6 मौजूद हैं, और कार्बन 14 में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद 6 होगी। ठीक है, आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद सेम होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे कार्बन 12 के अंदर? वो भी 6 होंगे। कार्बन 14 के अंदर 8 होंगे। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद दोनों में क्या होगी? सेम होगी। राइट। A sample of carbon 12 is contained in a thin aluminum container of thickness 0.2 mm. Radiation from the sample is detected outside the container. When the thickness of the aluminum is increased to 6 millimeter, no radiation from the sample is detected outside the container. State the type of radiation which is stopped by increasing the thickness of एल्युमिनियम। ऑब्वियसली सी बात है, बीटा पार्टिकल्स। आप थिकनेस एल्युमिनियम की बढ़ा देंगे तो जो है वो बीटा पार्टिकल्स विल बी स्टॉप्ड बाय इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू नो दैट द सैंपल डज नॉट emit one type of radiations, राइट। सो आपको पता है गैमा रेज जो हैं, दे आर हाईली penetrating penetrating rays, राइट। और हाईली पेनिट्रेटिंग है जिसकी वजह से वी कैन नॉट स्टॉप बाय 6 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। अल्फा की आपको पता है कि आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। ठीक है। और बीटा की आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होती है, पेनिट्रेटिंग जो गैमा है उसकी जो है वो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, आयोनाइजेशन कम होती है। ठीक है। बीटा भी पेनिट्रेटिंग पावर होती है जो कि अल्फा से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी जो है इन द, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें हो गए होंगे।